गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एजुकेट फाइल। मैथ समझ लिया है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। चलते हैं आज के मैथ की ओर। आज उनका मैथ प्रश्न है, प्रूव दैट 2 + √3 is an irrational number where √3 is an irrational number। दिया है वो श्री एंड इरेशनल नंबर, यही एट गिवन है। बाकी साबित करना है 2 + √3, मतलब कि इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर भी जोड़ेंगे तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये साबित करना है। तो चलिए साबित करते हैं, यानी कुछ भी जोड़ते हैं, अगर प्राइम नंबर भी जोड़ते हैं तो वो इरेशनल नंबर हो जाता है। जैसे 2 इज अ प्राइम नंबर और इसको जोड़ते हैं इरेशनल नंबर के साथ, तो ये साबित करना है कि हमारा ये इरेशनल नंबर होगा। लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन। गिवन √3 is an irrational number, and we have to prove that 2 + √3 is an irrational number. Let 2 + √3 be a irrational number. Well, P by Q is 6 newtons on where here is not important region, which is आपको मानना पड़ेगा। इसे मान करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं और सॉल्यूशन की ओर। इसलिए 2 + √3 is equal to P बटा Q. This tells to √3 is equal to P बटा Q minus 2. So P बटा Q is irrational number. इसलिए P बटा Q minus 2 is also a irrational number. This means √3 is also a irrational number.
We're back again, man. And it is with an international fundador. Irrational number. Alarm. History as you in that globalized world story is different and there's some non-really global yeah in become in becomes strong. And to balance the more free is and irrational fundamental फ्रॉड। तो इस प्रकार से ये साबित हो गया कि 2+√3 एक इरेशनल नंबर है, जो कि हमें साबित करना था। साबित करने से पहले हमने मान लिया कि ये इरेशनल नहीं बल्कि रेशनल नंबर है और इसका स्यूटनेट फॉर्म P/Q है और Q 0 के बराबर नहीं है। उसके बाद हमने सॉल्यूशन की ओर बढ़ा और सॉल्यूशन की ओर बढ़ते बढ़ते ये साबित कर दिया कि हमारा 2+√3 एक इरेशनल नंबर है। तो आज के वीडियो में यहीं पर एंड करते हैं। एंड लिंक दिए है, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलेंगे तथा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।